रिकॉर्डिंग शुरू होगी. जी सर, हो गया। Yes, sir. यस सर. ऑलराइट. Alright, so I was mentioning that while processing English, we do not grow tokens beyond sentence boundaries. So similarly, for example, हम C का एक टोकन समझेंगे, CO एक टोकन समझेंगे, COM टोकन समझेंगे, COME टोकन लेंगे, पर COME स्पेस TO हम ये टोकन नहीं लेंगे. So we'll end the token growth of COME to COME only, and we do not grow it beyond that. So obviously that doesn't make any sense. So we basically stop growing a token by if a space or a punctuation comes after a particular character. Unless, of course, if you are considering punctuations as part of tokens. Punctuations वैसे tokens का part काफी times होता है, but space नहीं होती. So you should keep this in mind as well. Space as part of token very rarely होती. कर सकते हैं, maybe some application might want it, बट पंक्चुएशन ज़्यादा एप्लीकेशंस में कर लेते हैं, खासतौर पे मॉडर्न डे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एप्लीकेशन पंक्चुएशन ले लेते हैं. ठीक है. ओके. एंड so in other words, so initially we uh, start with tokens that consist of a space and a character or the word after it. So जो मेरा पहला था आई था, so कम होगा, to and lums. So the underscore or some other character, whatever you like, you can use it to denote a space. So this means that this is a point at which a word starts, and once a word ends, for example, lums, LUMS, S के बाद कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब we do not grow our tokens beyond S. ठीक है. And the rest of the algorithm works in the same fashion. कोई इसमें difference नहीं है. ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर कॉर्पस, छोटा सा कॉर्पस है, मेरा नहीं ख्याल कोई आपके पास दो वर्ड मल्टीपल दफ़ा आ रहे हैं. TO आ रहा है, CO आ रहा है, ME आ रहा है, LU आ रहा है. सो देर इज इवन two words that are common. Anyway, so this is just for illustration purposes for the case where you add a space in front of each starting of Seriously? a word. हाँ सर. अगर स्पेस आ जाए तो क्या टोकन एंड हो जाता है हमारा? जी, मतलब स्पेस हम जब प्री प्रोसेस करते हैं टेक्स्ट फॉर टोकनाइजेशन, हम स्पेस स्टार्ट ऑफ वर्ड के आगे डाल देते हैं, और जो हमारे टोकन्स बनते हैं वो स्पेस स्टार्ट ऑफ वर्ड पे स्पेस ले लेते हैं हम. सो अंडरस्कोर आई मे बी अ टोकन एज वेल एज आई मे बी अ टोकन, बट वी डू नॉट टेक फॉर एग्जांपल आई अंडरस्कोर एज अ टोकन. बट व्हेन वी डूइंग आई कम टू नाउन तो हम क्या कहते हैं स्पेस की बेसिस पे सेपरेशन कर रहे हैं इसकी टोकनाइजेशन. So if I comes separately within text, तो I separate token होगा. If I comes at the start of a text, then underscore I would also be a token. But we will बट not have हमको I सेपरेशन किस तरीके से हो underscore as a token, because I, even if it ends a sentence, तो उसके आगे अंडरस्कोर नहीं लेंगे, वो का जो अगला वाला अंडरस्कोर है वो अगले सेंटेंस का स्टार्ट का होगा. एक जगह ही हमने अंडरस्कोर डाला है, आइदर स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और एंड ऑफ द सेंटेंस. So here we are by convention adding a underscore at the start of the sentence. ओके. ओके. Okay. Uh, so there's an example on the slides, as well as there's the same example is given in the book, तो वो आप जा सकते हैं. Yes, we are doing the same thing. वही BPE algorithm ही चल रहा है to build a vocabulary from text.
So in this particular case, let's say if your training data is I come to LUMS, तो उसमें सबसे पहले तो सबसे सिंगल कैरेक्टर्स होंगे, I होगा, C होगा, O होगा, M होगा, E होगा, T होगा. O of course occurs elsewhere as well. LUMS भी होगा. And then you look at के दो कैरेक्टर्स कौन से आ रहे हैं. Of course स्पेस I भी होगा हम लेंगे और स्पेस C भी लेंगे, स्पेस T भी लेंगे, स्पेस L भी लेंगे टोकन्स में. ये आपके इनिशियल टोकन्स होंगे. फिर देखेंगे कौन से दो इकट्ठे आ रहे हैं. And then we add and do k iterations to add k more tokens into the vocabulary. So as I said, you can run this. By the way, BPE के आपको simple visualization tools भी net पे मिल जाते हैं. Do a Google search, आपको visualization tools मिल जाएंगे how to do BPE. BPE would be encoded in many algorithms. Sentence piece एक algorithm है जो इसमें BPE encoded है. Plus of course if you use let's say कोई भी GPT या Llama उनमें भी ये tokenization के algorithms available हैं. ठीक है. So for example let's say आपने कोई भी language learn किया. This is I think the example given in the book. So let's say आपका low एक मिला, आपके पास ER मिला आपके पास. So even if you did not see lower in your training data set, you will be able to understand lower in the test set. ठीक है. So let's say training data set में लो था आपके पास let's say और था हायर था. So ER हायर से आया हुआ है and of course other text as well. तो let's say ये आपके पास दो मिले तो lower आप identify कर सकते हैं even if it is not explicitly seen in the training data. Because LOW भी टोकन है, ER भी टोकन है और सीक्वेंस मॉडलिंग जब आप कर रहे हैं तो ये इकट्ठा एक टोकन बन जाता है. Sir, then is there any specific difference between subword tokenization and BPE? Because essentially तो वही काम ही हो रहा है दोनों में. BPE is a specific algorithm for subword tokenization. Right. So there are other algorithms as well. जैसे हमने last time discuss किया था, there is something called word piece. There is also one thing that's called Unigram language modeling tokenizer, and there are others as well. But BPE most popular है. So we will be discussing BPE primarily. ये दूसरे जो दो हैं word piece और Unigram, they use the notion of language modeling as well. Basic process वही है, training phase है, encoding phase है. But while finding the tokens as well as while encoding, they use the idea of language modeling, which we have not studied yet. So इसलिए हम इसको detail में discuss अभी नहीं कर सकते. But again, as I said, ये less commonly use हो रहे हैं आजकल. But at this stage, I will just okay. Let's move on to the multilingual thing. So let's say आपने BP multilingual आपके पास corpus है, उसके BP आपने चलाया है, तो you will find tokens for English, you will find tokens for other languages as well. ठीक है. So the issue usually arises is that the English हमारे पास corpus जो होता है वो usually much larger होता है as compared to other languages. Let's say उर्दू की हम बात करें तो उर्दू का corpus usually smaller होगा in terms of the corpus that's available for English. If you run BPE, this algorithm would kind of emphasize English tokens and would not be able to find meaningful Urdu tokens, and Urdu would primarily be left with single characters or maximum two characters and so on. While English के longer sequences भी आपको मिल जाएंगे as tokens. So this is an issue with BPE as well as some of the other languages, especially when you are using multilingual BPE or subword tokenization. ठीक है. So low resource language tokenization. Uh,
language tokenization is still an open issue. So I will add a question here for you to just to investigate for before the next class. So just try to investigate which subword tokenization algos work best for, let's say, Urdu or other similar languages, let's say Arabic. So is BPE good? Or so this is a question that you should kind of investigate. आप अपना Google search कर सकते हैं, GPT को पूछ सकते हैं, and so on. And I will ask you guys what you have found in the next class. ठीक है? Okay, so BP algorithm is used by GPT. So the GPT shed 2 या 3 तक जो था वो it was use the standard BP algorithm. GPT 4o जो है वो it uses what is known as the byte level. BPE. So this is based on the encoding. Encoding का थोड़ा सा इसमें discussion थी which I won't go into more very detail here in class. आप the slides में भी है और book में भी है वो आप discuss कर सकते हैं. And you probably know that Unicode is the standard character set for all languages in the world. ठीक है? So just like ASCII was the standard set for English, and it was an uh, older standard proposed way back in the 1960, and was primarily handled Latin alphabets, which is used in English. But since we are dealing with multiple languages have different character sets, तो वो सारे character sets Unicode में defined हैं. So Unicode itself is I think 21 bit long, but it's usually represented as 32-bit strings or 32-bit hexadecimal numbers. So usually Unicode जो है hexadecimal होते हैं, तो hexadecimal आपको पता है UX से, and then of course the numbers after that. But for Unicode usually a convention होता है U plus and then the number after that, hex number after that. So this is basically hex number. ठीक है? That represents the particular character in the Unicode character set. So this is like a code point or UID, मतलब unique ID है, which is defined by this code point, a number, and we capture this number as a hexadecimal number. ठीक है? So each character is represented by a unique code point. And of course English के जो characters हैं वो ASCII वाले characters हैं. ASCII basically use 1 byte or 8 bits, and उसमें actually सिर्फ 127 characters वो use करते हैं, and the rest is basically used for other things. But since there are multiple languages in the world, so Unicode now currently encodes over 150,000 characters. ठीक है? एंड इसमें प्राइमरीली जो चाइनीज़ लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, वियतनामीज़, इस तरह की लैंग्वेज है, उनके करेक्टर्स सबसे ज़्यादा हैं, ओवर 100,000. सो इंग्लिश ऑफ कोर्स के करेक्टर्स थोड़े हैं, बट दे आल्सो अदर लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच एंड स्पेनिश विच हैव करेक्टर्स दैट हैव डॉट्स एंड क्रिटिक्स एंड सो ऑन. तो वो करेक्टर्स भी रिप्रेजेंटेड हैं. बाय द वे यूनिकोड में सिंबल्स भी हैं, mathematical symbols हैं, other symbols हैं, smileys हैं. It's a huge collection of characters, and each is represented, as I said, by a code point, which is a hexadecimal number. So जब भी आपके पास textual content होता है, वो उसमें each character is represented by Unicode, but when you code a file, that file is coded usually UTF-8.
ठीक है. So UTF-8, UTF-8, which is 8 basically means that 1 byte. But this is usually, since Unicode as you say is 21 bit, or you can say पूरे इसके 4 bytes हम यूज कर रहे हैं. तो UTF जो 8 क्यों इसको कहते हैं, बिकॉज इट्स ए वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग. सो लेट्स से आपके पास इंग्लिश का करेक्टर है ए है, तो इसको हम सिंपली 1 byte में रिप्रेजेंट कर लेंगे. ठीक है. बट लेट्स से आपके पास कोई यूरोपियन करेक्टर है, लेट्स से नाइव में जो आई के ऊपर 2 डॉट्स होते हैं. ये करता है मेरा चेंज, आई डोंट नो. द फ्रेंच आई, so this might require 2 bytes. ठीक है. And similarly, many of the Chinese characters they require 3 bytes. So Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese they usually require 3 bytes. And then of course symbols and other stuff usually require 4 bytes. तो जब भी आप encoding कर रहे हैं text की UTF-8 में, it is usually variable length encoding. जब इसको इंग्लिश करेक्टर मिलता है तो जो 1 byte में ही काम हो जाता है. जब इसको लेट्स से कोई सिंबल मिलता है तो उसको फुल 4 bytes यूज करता है. So this kind of saves space rather than using all 4 bytes for all characters. Let's say English के लिए भी 4 bytes use कर रहे हैं और French के लिए भी कर रहे हैं, so on. So that would take up too much space. So UTF-8 encoding uses chunks of 8 bits or 1 byte. So 1 byte if it is an English character, and more than 1 byte if it is some other character. And files are encoded in this way. So as I mentioned before, आजकल जो BPE है, it's called byte level BPE. वो करेक्टर लेवल पे नहीं चलता. हमने जो एग्जांपल्स दिखाई थी वो करेक्टर लेवल्स की थी. ए लिया था, स्पेस ली थी, सो लिया था. वो बाइट लेवल पे चलता है. वो बाइट कौन सी है? ये UTF-8 की बाइट है. तो हर बाइट को दैट मे बी दैट, लेट्स से इफ यू हैव ए 3 byte चाइनीज करेक्टर, उसका पहला बाइट सेपरेट लेगा, इवन दो दैट मे नॉट बी ए एक्चुअल करेक्टर, बट उसको सेपरेट एक टोकन लेगा व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेसिंग दैट टेक्स्ट. तो बाद में इसको कंबाइन करके बड़े टोकन बनाता रहेगा. So in this way, you have even greater flexibility in combining uh, or finding bytes or finding characters in multiple languages. So GPT-4o and maybe later on, it basically uses this byte level BPE. Okay, so any question on this? Okay, so now there are no questions. We can move on to the next main topic, which again I will cover relatively quickly. Okay, so there are two important things in text analysis. One is, of course, matching. The other is similarity. So if you are given two strings, so you have a string x, of course I'm using as a variable, okay, and you have a string y. So the question that you would like to ask is, what is the similarity between x and y? Okay, how similar is x and y? And this is string similarity. Okay, or also you like to say is x and y identical? So maybe you can have a function for that as well. So I don't know कीवर्ड क्या यूज होगा आइडेंटिकल के लिए. So identical x comma y. ठीक है.
So this would be pattern matching, and first case would be pattern similarity or string similarity. So इसके लिए we have standard techniques which you probably have studied elsewhere as well, but यहाँ quickly देखेंगे because in basic pre-processing as well as in some other applications ये use होते हैं. Even in today's times of large language models, these techniques aren't like outdated, they still use होती हैं. ठीक है? So you are familiar with regular expressions, right? So regex आपने कहाँ पढ़ा था, मुझे कोई बता सकता है किस कोर्स में पढ़ा था आपने रेगुलर एक्सप्रेशंस? यस, किस कोर्स? हाँ, डेटा साइंस में पढ़ा था आपने, ठीक है. अच्छा, डेटा साइंस में पढ़ा था, ठीक है. सो द 334 कोर्स, ठीक है, ठीक है. So, okay, so I would spend too much time. So regex is implemented in many languages with appropriate libraries. Python में भी है, previously Perl में होती थी, but nowadays most people use Python. ठीक है. Uh, so what is regex? Regex is a string, but that string basically specifies a set of strings. A string that specifies a set of strings. ठीक है. So, and this string, which we call regular expression, is written in a specific notation which has specific meaning. And using that meaning, you know that this string would match with some specific set of strings. So, how this string is written, of course, is a set of rules which is provided by regular expression. And these rules vary a little bit with different implementations. So, little bit variation है इसमें. So, and of course representations भी इसकी आप लिखने में भी आप different कर सकते हैं. In the book, for example, they use the keyword R and then the quote, and then आपके पास यहाँ string है और then the quote again. ठीक है. Previously इसको हम इस तरह भी represent मैं कर रहा था पहले, और book में भी था, but recently मैं change कर दिया है. // the first forward slash is not a part of regex. It's just indicating that regex is starting. Then you have the regex, and then again // which marks the end of the regex. Okay. So either of these two I will be using, probably the second one because easier to type. पहले वाले में आपका R and then quote and then the quote. Okay. But in the second case, slash and slash is not part of regex. It's just delimiting regex. Okay. Okay. So any sequence of characters would match with itself. So let's say आपने कम लिखा है as a regex, ये regex है. So this will match with any word that has come in it. And it might be part of a word, it might be a separate word. So this would match, for example, come. It would also match become. ठीक है. So उसके साथ में match करेगा. So this is called literal. It matches everything. And of course, literals में आपके पास ranges भी available हैं. So A to Z, sorry, A to Z would always be used in a disjunction. ठीक है. So this is literal, and then we have the brackets, square brackets. Okay. So if you write any character in between left bracket and right bracket, each character would be considered as an OR. So let's say मैं AB इसमें लिखता हूँ, ठीक है. So this would match, for example, my name Asim. For example, it has A in it. So it will also match able because it has both AB in it. It will also match book because it has B in it, and so on. ठीक है. So A and B are both taken as separate characters, and there is an OR between it.
ठीक है. So इसी तरह within the square brackets the caret symbol basically is a negation symbol. So it means that not A, not B. ठीक है. And that caret symbol has to be the first character in the square brackets. ठीक है. If it is not the first character, then it will be a literal. If it is the first character, then it means that it is the negation of the character that follow it. It's for negating those characters. So this will match, for example, A and B come, for example, and it will match other, for example, lums, for example, and so on. ठीक है. What else? Of course, you also have ranges. So A to Z. So this will ranges are defined in many implementations. So एक ये range है. Similarly, I'll just write those ranges. So 0 to 9 की भी range होती है. These are digits. So this will match any digit between 0 and 9. ठीक है. 0 to 9, A to Z. And of course, capitals में करना तो capitals का आप लिख लें. A to Z. So this will be capitals A to Z. Any character that is capitalized. So this, for example, would match Asim, for example, and for example, uh, KADE, and so on. All capitals. Remember, this is OR. ठीक है. Remember, and पैटर्न regex में जो भी वर्ड जिसमें करेक्टर आ रहा है वो मैच रिटर्न हो जाता है. एंड यूजली अगेन दिस इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट. यूजली द फर्स्ट रिटर्न वो करता है, आगे वो नहीं करता. आगे के लिए फिर से आप रन करते हैं. बट मे बी इन सम इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न ऑल ऑफ देम. ठीक है. सो द फर्स्ट केस फॉर इन दिस केस जैसे केड लैब है, के उसको कैपिटल नजर आया तो उसने ये रिटर्न कर दिया द होल वर्ल्ड और द होल स्ट्रिंग दैट कंटेन्स के. इन द फर्स्ट केस आसिम कैपिटल ए है तो पूरा वो स्ट्रिंग जिसमें कैपिटल आ रहा है वो रिटर्न कर दिया. ठीक है. So, and then we have several, you can say, wild card characters, which have special meanings. ठीक है. उसमें एक जो है, फॉर एग्जांपल, टिपिकल जो एग्जांपल यूज की जाती है इसके लिए, CLOLOU question R. The question mark, again, this is a special character. It's not used as a literal here. तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है जो प्रीवियस करेक्टर इज ऑप्शनल. करेक्टर, not the whole word, is optional. So this would match with color, which is the American form of color, and the color. It will match with both of these. So question mark का मतलब ये है. ठीक है. And of course we have other, for example, let's say A plus slash. तो प्लस का मतलब ये होता है कि the previous character occurs one or more times. ठीक है. One or more times. So this would match with A, this will match with AA, it will match with AAA. ठीक है. सिमिलरली इसी तरह एक और करेक्टर है, स्पेशल करेक्टर है A asterisk. Asterisk means that previous character occurs 0 or more times. तो इसके लिए so this would match with what? It will match with B, it will match with BA, it will match with B, BA, and so on. ठीक है. 0 or more times. So plus 1 or more times, and question mark is optional. Can what be changed? फिर से रिपीट करें, वो क्वेश्चन समझ नहीं आया.
change. Let me see. No, asterisk is not a question mark. Asterisk basically means that previous is optional, yes, 0 times, plus it can occur multiple times. So your question mark means the previous one is just optional, 0 or 1 times, while asterisk is 0 or multiple times. ठीक है. So for example, B A question mark ये मैच करेगा B के साथ और B A के साथ, ठीक है, बट नॉट विद B A, ठीक है. ओके, अच्छा. Alright, so moving on. So we talked about multiple times. तो एक इसमें मोस्ट इम्प्लीमेंटेशंस में आपके पास आइटरेटर्स टाइप के भी, इसको आइटरेटर्स कहना चाहिए या आइटरेटर्स, दैट्स फाइन, आइटरेटर्स भी ठीक है. उस तरह के भी आपके पास होते हैं ऑपरेटर्स. सो फॉर एग्जांपल जैसे बी ए, सो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने 2 लिखा हुआ है. दिस मीन्स दैट द प्रीवियस प्रीसीडिंग करेक्टर 2 दफा एग्जैक्टली दफा आना चाहिए, प्रीसीडिंग करेक्टर, ठीक है. सो दिस वुड मैच विद बी ए ओनली एंड नथिंग एल्स, ठीक है. और इसमें मल्टीपल वेरिएशंस हैं. तो बी ए 2 कॉमा, दिस मीन्स दैट मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई नहीं है. So this will match with BAA and BAA as well. और ऑफ कोर्स आपने मैक्सिमम आप अटैच भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल BA 2, 3. So this will match with BAA and BAA and no more than that. ठीक है. किसी का क्वेश्चन था? Yes, sir. So I just wanted to ask कि in regular expressions में ये जो भी phrases आ रही हैं, जैसे for example अभी BA, we are saying कि the preceding character can be repeated twice or thrice. तो इसमें like is this case sensitive? For example, if B is lowercase and A is uppercase, will it be the same as let's say both of them are uppercase? इट इज केस सेंसिटिव. लेट्स से आपने रेजेक्स में लोअर केस लिखा हो तो लोअर केस के साथ ही मैच करेगा, अपर केस के साथ नहीं करेगा. तो आपने दोनों Right, करने हैं right, तो makes sense. वो डिसजंक्शन वाला आपको लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल बी बी एंड देन ए एंड देन लेट्स से 2. फिर अब ये लोअर केस भी हो सकता है, ए बी और बी भी, अपर केस भी हो सकता है या मिक्स हो सकता है, ठीक है. सिमिलरली आप पैरेंथेसिस भी अगेन स्पेशल करेक्टर है, उससे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ, ठीक है, और 2 मैं यहाँ लिखता हूँ. सो व्हाट वुड दिस मैच? सो अब ये जो पैरेंथेसिस है, दिस ग्रुप्स, पैरेंथेसिस नॉट कंसीडर्ड एज अ लिटरल हियर, इट्स यूज्ड एज स्पेशल करेक्टर और इसका मतलब ग्रुपिंग है. अब ये हा को एज 1 यूनिट लेगा, जो अगला ऑपरेटर आ रहा है मेरे पास 2 का, वो कहेगा हा 2 दफा आना चाहिए, तो मेरे पास दिस वुड मैच विद हा एंड हा, ठीक है. इट विल नॉट मैच विद 1 हा. सो parenthesis here is a grouping operator. एंड टाइम हो गया, बढ़िया कि जस्ट फाइनली वन मोर थिंग. अब काफी मैंने स्पेशल करेक्टर्स दिखाए हैं आपको.
स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने लिटरली यूज करने हैं, तो देन यू हैव टू एस्केप इट यूजिंग द बैक स्लैश। ठीक है, सो लेट्स से बैक स्लैश आपने क्वेश्चन मार्क करना है, तो यू लुकिंग फॉर ए क्वेश्चन मार्क। सो फॉर एग्जांपल व्हाट, सो दिस विल मैच व्हाट। ठीक है, सो हम क्वेश्चन मार्क को एज ए लिटरल ले रहे हैं। तो इसी तरह और भी आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे पैरेंथेसिस ढूंढना है, तो उसको भी आपने एस्केप करना पड़ेगा इफ यू वांट टू फाइंड इट एज ए लिटरल, एक्सेप्ट व्हेन इट इज यूज्ड इन ब्रैकेट्स। इसमें लेट्स से आपने एस्टेरिक किया, तो दिस विल कंसिडर्ड एज द लिटरल एस्टेरिक। पीरियड, बाय द वे पीरियड का मैंने नहीं बताया, पीरियड मैचेस विद एनी कैरेक्टर, so period is another special character, question mark, so this would match with asterisk, period and question mark in its literal sense। यहाँ आपको escape करने की जरूरत नहीं है, but elsewhere आपको escape करने की जरूरत पड़ेगी if you are trying to match them explicitly or in the literal sense। तो मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो गया, so I will kind of stop here। Are there any questions before we leave? So in the next class, मेरे ख्याल से more or less ये खत्म हो गया, I think 2-5 minutes more, and then we'll briefly talk about edit distance, string similarity, and then we'll move on to sparse representations and then its applications, primarily IR and text classification. And also, we will announce on Slack as well on Monday, the coming Monday, you will have your first quiz in class. So, and we will have the quiz at the end of class, and it will be about 15 minutes long. So, the quiz will be and at the end of class. So, you can actually even listen to these lectures in class. If you are comfortable, you can come to class and listen. And if there's a reasonable participation of students in class, I can ask the TA to be there as well. So TA भी आपको right away वहाँ भी कुछ help out कर सकता है. But of course, this will depend on how interested you guys are in attending these lectures in class. Obviously, जब quiz होगा उस दिन तो आपने आना ही आना, otherwise you will miss the quiz. ठीक है? The quiz would typically cover everything that we have done till the next class, मतलब Wednesday. जी, जो हमने cover किया अगले class तक. So far we have covered chapter 1 and most of chapter 2. By Wednesday we'll be covering most of chapter 2. तो ये आएगा आपका quiz में. ठीक है?